आई फील मोस्ट ऑफ अस वी फॉरगेट वट एवर वी लर्न, स्पेशली अगर हम उसको प्रैक्टिस ना करें या अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट ना कर रहे हैं। एंड द ओनली वे टू रिमेंबर एनीथिंग इज टू प्रैक्टिस। अब या तो आप उसको डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश कम्युनिकेशन अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हो तो यू विल रिमेंबर दैट, राइट। बट अगर आप उसको चीज़ को रिविजिट नहीं कर रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो यू विल इवेंचुअली फॉरगेट दैट थिंग। और यही चीज़ मैं फेस कर रहा था पिछले कुछ टाइम से। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम आई एम बिल्डिंग अ प्रोडक्ट जहाँ पे मैं अपने खुद के क्वेश्चंस डाल सकूँ, खुद के एग्जाम्स बना सकूँ, खुद अपने बेस पे प्रैक्टिस कर सकूँ किसी भी टॉपिक पे। सो यार बातें तो बहुत हो गई, लेट्स गेट इनटू द सिस्टम। और अभी तक ये इतना भी हुआ है, लेट मी शो यू। सो दिस इज व्हाट वी आर बिल्डिंग। फर्स्ट वी हैव डैशबोर्ड जहाँ पे हम लोग बेसिक डेटा दिखाएंगे, परफॉर्मेंस, प्रोग्रेस यू कैन ट्रैक, कितने टेस्ट आपने कंप्लीट किए हैं, क्या एवरेज स्कोर है, ऑल दीज थिंग्स। सो अभी के लिए दिस इज द डमी डेटा ओनली, बट इस पे काम करेंगे लेटर ऑन। सेकेंड थिंग, द मेन पार्ट इज एग्जामिनेशंस। ओके, सो एज वी सी यहाँ पे 4-5 एग्जाम्स क्रिएट कर रखे हैं ऑलरेडी, रेलवे एग्जाम्स। सो दीज आर द एग्जाम्स विच यू कैन क्रिएट। सो यू कैन क्रिएट योर कस्टम एग्जाम्स फ्रॉम हेयर। ओके, आपको नाम डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है, सब्जेक्ट्स यू कैन ऐड। आई विल शो यू दिस BCA फर्स्ट ईयर, इसमें मैंने कुछ डेटा डाला है फॉर जस्ट टेस्टिंग। सो दिस इज BCA फर्स्ट एग्जाम। Here you can add subjects like C language and basics, human computer interaction I added. Okay, then you can add further subjects here. So for example, subjects you can add maybe maths. Okay, and then you have to upload your syllabus and the book if you want. Okay, and then you can add the subject only. For example, this C language I have up yes the subject details का page. Here we have total questions कितने added है, categories, all these small details about this whole subject, right? Then we have this knowledge base. Now, okay, and based on that, and you can then create, you can edit all these things, basic functionality. Then you can practice your this notes only. Okay, फिर ये कुछ dummy questions है यहाँ पे. So बेसिकली अभी के लिए आई जस्ट क्रिएटेड द UI। अभी तक ये UI कंप्लीट हो गया फॉर दिस क्विज ओनली। ओके, सो ये कुछ हार्ड कोडेड डेटा है बेसिकली। देन यू कैन कंटिन्यू एग्जाम और मे बी एग्जिट दिस थिंग। देन यू हैव अ लॉट ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स हियर, एंड यू कैन ऐड फर्दर यूनिट्स आल्सो। ओके, एंड द best part of it is this exam, attempt exam. So basically अभी यहाँ पे कोई सेव नहीं, you can create your custom exams here। और ये एग्जाम बेसिकली इस डेटा के बेसिस पे हैं अभी। देन मे बी विल जस्ट मूव इट आउट एंड डू सम और बेटर चीज़ें और कर सकते हैं इसको लेके। मे बी लेटर ऑन विल मूव इट आउट एंड थ्रू आउट लाइक पूरे अपने नॉलेज बेस के हिसाब से यू कैन क्रिएट सम कस्टम एग्जाम्स ऑल्सो। ओके, सो लेट मी जस्ट शो यू दिस थिंग ऑल्सो। I'm working on this part. अभी it's the dummy thing, but I'm working on this part कि by prompting you can generate your exams. For example, this C language basic with 10 questions and in 30 minutes. For example, I'm putting 10 minutes here and then just generate this configuration and this will be saved in your system. Okay, and then you can start your exams. So now you can 10-minute timer and 10 questions. सो these are the functionality जो अभी तक डन हुई है। बेसिकली मेजर चंक मैंने सिर्फ UI का डन किया है, ऑल्दो इस पर रिविजिट करेंगे, इसको और इम्प्रूव करेंगे लेटर ऑन। बट अभी के लिए बेसिकली आई वांट कि एक बार फंक्शनैलिटी में डन हो जाए। ओके, द रियल फंक्शनैलिटी विच आई वांट, वो बिजनेस लॉजिक जो बेसिकली है इसका, वो डन हो, देन विल मूव ऑन टू मे बी रिविजिट द UI अगेन। ओके, उसको इम्प्रूव करेंगे। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? राइट नाउ सारे क्वेश्चंस जो हैं या नॉलेज जो इसका जो भी नोट्स वगैरह है, ये यूज़र को इनपुट करने पड़ रहे हैं। ओके, ऑल्दो दिस इज द डमी डेटा, बट अभी यूज़र इनपुट कर रहा है। बट आई वांट कि यूज़र जस्ट कस्टम एक प्रॉम्प्ट डाले, बेस्ड ऑन दैट बिहाइंड द सीन बैकएंड में कोई सर्विस या कोई AI मॉडल उसके लिए क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली जनरेट करे, मे बी समराइज करें उनके टॉपिक्स को, बेसिक नोट्स भी बनाए इसके लिए, so that user use that complete data for his practice for examinations. Okay, so this is the next step which I'm working on right now. Already started working on this thing.
एंड आने वाली वीडियोज़ में आई शो यू दिस कि उसका क्या प्रोग्रेस है, कैसे वो बनने वाला है. आई एम काइंड ऑफ रियली हैप्पी विद द UI थिंग. एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस कि इसके लिए क्या कुछ स्टैक मैं यूज़ कर रहा हूँ. स्टैक इज़ बेसिकली क्या, कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, किस चीज़ पे बना रहे हैं, क्या इसका फ्यूचर होने वाला है. ओके. एंड द सेकंड थिंग विच विल डिस्कस इज कि जो बिहाइंड द सीन सर्विस में बना रहा हूँ वो कितना डन हुआ.